very warm welcome to everybody gathered here. नमस्कार देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कांगड़ा के सभी सदस्यों की ओर से स्नातकीय बैच 2022 और 2023 के दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कमलजीत सिंह और मैं कृति श्रीवास्तव आपके समक्ष आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। A very good day, ladies and gentlemen. On behalf of the faculty and staff members of the National Institute of Fashion Technology, Kangra, we are delighted to welcome you all to the 9th convocation ceremony for the batches 2022 and 2023. Ladies and gentlemen, the convocation procession was led by our chief guest, Shri J.J. Valaya, a renowned fashion designer, and is accompanied by our guests of honor. Srimati Tanu Kashyap, Director General NIFT, Professor Dr. Sudha Dhingra, Dean Academics, Director NIFT Kangra, Professor Dr. Rahul Chandra, Joint Director NIFT Kangra, Shri Dinesh Kumar Rangra, Campus Academic Coordinator NIFT Kangra, Shri Saurabh Chaturvedi, Link Campus Academic Coordinator NIFT Kangra, Shri Pavitr Puneet Singh, the course coordinators of all the departments and the entire faculty team. Thank you so much for being present here on this auspicious occasion and gracing this event. भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का स्मरण किया जाता है। समारोह से पहले दीपक जलाना कई परंपराओं के सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसे अक्सर अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मक को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। सकारात्मकता, ज्ञान और शुभता को आमंत्रण करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। दीपक जलाने का कार्य किसी कार्यक्रम या समारोह में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करने का प्रतीकात्मक संकेत है। उसी परमात्मा को स्मरण करते हुए हम मां सरस्वती को नमन करेंगे। The convocation ceremony is a special occasion where each of the graduates are at the brink of a new beginning. On this note, I request the audience to rise as we seek the blessings of Devi Saraswati, the goddess of knowledge. मैं हमारी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कांगड़ा परिसर की ओर से मैं फिर एक बार इस गरिमामय समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। निफ्ट कांगड़ा गौरवान्वित है कि आदरणीय जे.जे. वलाया, जाने माने फैशन डिजाइनर, महानिदेशक निफ्ट श्रीमती तनु कश्यप जी IAS, डीन एकेडमिक्स निफ्ट वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा ढींगरा जी का मुख्य विशिष्ट
एवं विशेष अतिथि के रूप में आगमन हुआ है। हम सभी आपके प्रति सादर आभार प्रकट करते हैं। अब मैं हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर राहुल चंद्रा जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री जे वलाया जी का हिमाचली शाल भेंट कर स्वागत करें। हिमाचली शॉल अपने जियोमेट्रिक पैटर्न्स डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर 2010 में हिमाचली शॉल को भारत सरकार द्वारा माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था। अपने जटिल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के लिए जाने जाने वाले इन शॉलों पर पौराणिक मूल के रंगों के साथ धार्मिक महत्व की वस्तुओं का बुना जाता है। धन्यवाद महोदय। We now welcome Srimati Tanu Kashyap, IAS Director General NIFT. I request our Director, Professor Dr. Rahul Chandra, to please felicitate Srimati Tanu Kashyap ji with a specially crafted shawl, a symbol of Himachal Pradesh's rich heritage. We are honored by your presence, ma'am. Thank you, sir. हम आभारी हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अब मैं हमारे शैक्षणिक समन्वयक श्री सौरभ चतुर्वेदी जी सह प्राध्यापक से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे हमारे विशेष अतिथि डीन एकेडमिक्स वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा ढींगरा जी को हिमाचली शॉल भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। We are also honored to have amongst us today Dr. Vibhavri Kumar. I now request Ms. Deepshikha Walia, Course Coordinator, Fashion Communication, NIFT Kangra, to please welcome ma'am to this August event. Thank you, ma'am. दीक्षांत समारोह आपकी जीवन यात्रा में एक मील का पत्थर, ज्ञान और सीखने की आपकी खोज का अंत नहीं है। सीखना जीवन भर जारी रहेगा और होना चाहिए। आप ज्ञान और कौशल से सुसज्जित होकर नई चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का लाभ उठाने और अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार होकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जा रहे हैं, नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस सफलता को पाने के लिए आपके माता पिता ने विभिन्न परिस्थितियों में पूरा सहयोग दिया, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपकी सराहना करते हैं। आज नवचेतना और नवोत्साह के साथ ये स्नातक एक नए सफर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इनका हौसला बढ़ाएं। Please put your hands together for the new graduates. Situated in the picturesque Kangra Valley, overlooking the beautiful Dhauladhar Himalayan ranges, the Kangra Center started its journey in the year 2009. Learning at the foothills of these majestic mountains has created a wonderful environment for the young, creative professional. The backdrop, coupled with the globally recognized NIFT curriculum, promises learning that originates in international stimuli, as well as a persevering emphasis and exposure to craft practices, thus setting the tone for next-gen professionals that are well-grounded in their cultural identities. इस गरिमामय समारोह में सम्मिलित संकायगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण, पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
और हमारे गणमान्य अतिथियों का पुनः एक बार दिल से आदर, आभार व अभिनंदन करते हैं। अब मैं हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राहुल चंद्रा जी से नम्र आग्रह करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री जे वलैया जी से दीक्षांत समारोह आरंभ करने की अनुमति लें। Sir, may I request you to declare the convocation open? I declare the convocation open. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I now request you to join me in welcoming our director, Professor Dr. Rahul Chandra, to present the academic report for NIFT Kangra's 9th convocation ceremony. Thank you, Kriti. उत्क्रामंत स्थितम वापि भुषन्नाम वा गुणांतरितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. The ignorant do not perceive the soul as it resides in the body and as it enjoys sense objects, nor do they perceive it when it departs. But those who possess the eyes of knowledge can behold it. Respective chief guests of the occasion, Shri J. Valaya ji, Director General NIFT Ms. Tanu Kashyap ji, IAS, Dean Academics NIFT Professor Dr. Sudha Dingra Madam, distinguished guests present here, my colleagues from NIFT Kangra and from other NIFT campuses, alumni, parents, graduates, friends from media, ladies and gentlemen, Namaskar and very good evening. I extend a very warm welcome to one and all present here in convocation ceremony honoring the batches of 2022 and 2023. I quoted from the verses of Bhagavad Gita that throws light on the importance of knowledge in our lives. We at NIFT Kangra take inspiration from our Vedic literature and are guided by the principles laid down there. Now, with your permission, I would like to present the academic report for the year 2022 and 2023. Established in 2009, NIFT Kangra is renowned for its excellence in fashion and design education, with over 1,500 successful graduates and a current enrollment of approximately 700 students. We offer a diverse range of undergraduate and postgraduate programs. Our campus, nestled in the scenic landscape of Himachal Pradesh, spans 26 acres, providing an ideal environment for nurturing creativity and owning design skills. In our past 15 years journey, we have expanded our programs to include undergraduate, 5 undergraduate and 2 master's programs. In year 2022, a total of 157 students have graduated from NIFT Kangra, and the figures was 153 in the year 2023. I'm glad to share that out of the graduating students, more than 60% got placed and 40% chose to settle down as entrepreneurs or decided to go for further education. Notably, 4 students from these batches participated in semester exchange programs at international institutes and universities. Our alumni, now exceeding 1,500, hold influential positions in the industry. Friends, as a professional institute, NIFT Kangra has actively involved in project works. We have emerged as a comprehensive hub for craft, fashion, and garment-related initiatives in the region, with enduring partnership with institutions like Labasna, DRDA District Chamba, DIC Shimla, and various ITIs. The institute has spearheaded numerous impactful projects. Some noteworthy completed and ongoing endeavors include dress design and fabrication project from Labasna, wall painting project for District Kangra and District Hamirpur, impact assessment study of Chambyal project, design and technology workshop for bamboo craft in District Kangra, training of ITI instructors, and a skill development program for Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam. Our ongoing projects includes UNDP project in Pangi district, and another is design and development of 3D model of Ma Chintapurni.
As an institute, we also support startups to grow through an incubation cell. For this, we partnered with the Himachal Pradesh government to establish the startup cell. We provide workspace, textile and design related infrastructure, and mentorship in design, technology, and management to our startups. Even though in its nascent stage, NIFT Kangla Startup Cell has 4 diverse businesses incubated under its roster, of which 2 startups, Irioparks and Himbazar, have successfully completed their incubation period. The present 2 startups, It's Ham and Winicart, have been inducted in the year 2024 and are expected to complete their incubation by year 2025. For Winicart, I am proud to share that this recently incubated startup is an initiative of NIFT Kangla alumni and students. It aims at reviving Himachal crafts by empowering artisans. With our presence in the region, NIFT Kangla has made significant contribution at local craft of Himachal Pradesh. With the support of Ministry of Textiles, we have undertaken significant initiatives to promote craft clusters in Himachal Pradesh and neighboring areas. This inclusive program encompasses craft research and documentation, craft-based project development, artisan awareness programs, and craft bazaars. Under this initiative, artisan awareness workshops were organized during 2022 and 2023, and a craft bazaar was organized in 2023 in collaboration with the Kangla Valley Carnival. Additionally, during this academic year, NIFT Kangla has adopted a proactive instance in preserving and reviving languishing crafts such as stone carving and wood carving. The primary objective is to meticulously document these crafts through video and photographic mediums with a particular focus on techniques, processes, and artisans' interviews. The involvement of students from the Master of Design program and Master of Fashion Management in researching and documenting these crafts in Chamba cluster underscores NIFT Kangla's commitment to promoting traditional crafts. Furthermore, NIFT Kangla is collaborating closely with the National Awardee Artisan of Kangla Miniature Painting, Shri Dhani Ramji, for upliftment of this tradition. As an academic institution, we undertake a lot of academic activities as well. In 2022, a national conference on handlooms and handicraft titled Sustaining Cultural Heritage was convened. Additionally, 2 training of trainers sessions were organized on different subjects. Furthermore, we take pride in hosting several workshops over the past 2 academic years, including workshop on new and sustainable materials, Indo-Swedish workshop repositioning Indian textile recycling sector into global context, workshop on achrak printing and eco-printing, photography workshop in collaboration with Canon India, among others. Now, please allow me to share some of the key activities that took place in NIFT Kangla during the last 2 academic years. We begin with the observance of National Handloom Day, coinciding with the National Conference on Handlooms and Handicrafts, held in August 2022. A training session on Tally was conducted on campus for the accounts and admin staff from all NIFT centers. Throughout both the years, NIFT Kangla consistently organized a range of programs including Hindi Pakwada Divas, Cyber Jagruta Divas, Vigilance Awareness Week, Swachhta Pakwada, Spectrum, Alumni Meet, and International Yoga Day. These events have now become a regular and integral part of our institution's calendar, fostering a holistic development and community engagement. It would be remiss of me not to highlight the remarkable achievements of our faculty members, particularly during the last 2 academic years. With a faculty team of 35 dedicated and qualified members, including 8 currently holding PhD qualifications and 11 pursuing their doctoral studies, our academic staff exemplify excellence in their respective fields. They have been frequently invited to deliver guest lectures at various institutes and forums, showcasing their expertise and contributing to academic discourse beyond our campus. Our commitment to faculty capacity building is evident from their active participation in training of trainers programs organized by other campuses. In the last 2 academic years, a total of 18 faculty members have availed themselves of these opportunities, engaging in professional development. Faculty members actively contribute to research publications, for which we foster an environment conducive to scholarly work. Over the past 2 academic years, our faculty members have presented a total of 31 papers in various national and international journals. To our pride, one of our faculty members, Ms. Chabi Gangwar, was granted a patent
for her invention in the area of fiber extraction from sugarcane bagasse in year 2023. Now, graduation show. The highly anticipated event marks the culmination of students' education at NIFT, providing a platform to showcase their achievements. In May 23, the Department of Fashion Management Studies hosted its first graduation show, The Bottom Line, showcasing managerial talent and innovation. FNLA batch of 23 displayed eco-friendly projects. Fashion communication student presented work they did with Bajus, Dabur, Spotify, and WhatsApp. Fashion design showcased collection blending cultural motifs and futuristic idea, and fashion technology focused on sustainable practices. Tantu, the textile design show, featured diverse textile products inspired by culture and artistic themes. At the end, I extend my heartfelt congratulations to all the graduating students. As you transition from student life to the professional world, you will encounter new challenges and opportunities. I am confident that NIFT has equipped you to confront these challenges head-on and overcome them. However, it is important to recognize that life is a continuous learning process. While formal education may end here, learning never stops. Practical experience in life will impart valuable lessons that cannot be gleaned from textbooks alone. Be open to these opportunities for growth and embrace them as a lifelong learner. नाहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मिहि विद्यते. इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है. Please always remember these words as quoted again from Bhagavad Gita. Now, as you embark on this new chapter, remember to look beyond yourself. Your contributions are not limited to your company. They extend to serving your country and society as a whole. I wish you all the very best in your future endeavors. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Creative integrity and dignity are ideals that every NIFT graduate commits to uphold. These are the tenets by which they promise to take their alma mater forward. On this note, I request our Dean of Academics, Professor Dr. Sudha Dhingra, to please administer the convocation pledge. अब मैं हमारे विशेष अतिथि वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा ढींगरा जी, डीन एकेडमिक्स निफ्ट का स्वागत करना चाहूंगा। महोदया जी, आप एक प्रतिभावान शिक्षाविद हैं। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा ढींगरा जी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में डीन शैक्षणिक हैं। आप निफ्ट में पिछले 3 दशकों से शिक्षण से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी प्रमुख योग्यता शिल्प, भारतीय और विश्व वस्त्रों के अध्ययन में है। आपने सीबीएसई 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अंडरस्टैंडिंग टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल प्रोफेशनल अध्ययन की पुस्तकों का सह लेखन किया है। आपने उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की हथकरघा परंपराओं को कवर करने वाली पुस्तक टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया का भी सह संपादन किया है। आप खादी उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक भी हैं, जो कि केवीआईसी को समर्थन देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक प्रायोजित परियोजना है। भारतीय और वैश्विक बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले विविधित खादी उत्पादों को डिजाइन, उत्पादन, विपणन करने में खादी संस्थानों की सहायता करने के उद्देश्य से निफ्ट में केंद्र स्थापित किया गया है। मैं आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। फैकल्टी नहीं, स्टूडेंट्स जिनको शपथ लेंगे, दोनों बैचेस। और आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे ये दीक्षांत शपथ। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं लगातार प्रयास करती रहूंगी कि मैं न्यायपूर्वक, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ अपना पेशागत कार्य करूंगी कि मैं व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखूंगी
कि अपने डिजाइन प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के ज्ञान का उपयोग संस्थान के सम्मान के लिए और वस्त्र परिधान एवं सहायक उद्योग जगत की सेवा के लिए करूंगी और विस्तृत रूप से अपने देश और मानवता की तरक्की के लिए कार्य करूंगी। मैं अपने व्यवसाय में राष्ट्रीय मूल्यों और नैतिक आचार विचार का समर्थन करूंगी। We'll take the pledge in English now. I hereby pledge that it shall be my constant endeavor to be fair, honest and diligent in the discharge of my duties as a professional to uphold the dignity of the individual and integrity of the profession, to utilize my knowledge of design, management and technology for the glory of the institute and in the service to the textile, apparel and accessories industries, and for the progress of my country and mankind at large. I will, in my profession, uphold the values and ethos of nation. Thank you. Thank you so much, ma'am, for realigning us with the vision of NIFT. Ms. Tanu Kashyap is an alumna of Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. She's pursued her MPhil from Jawaharlal Nehru University. In 2005, she joined the Indian Administrative Service and was allotted to the Punjab Cadre. With over 2 decades of service, she held key positions in Punjab's government, including Secretary of Higher Education and Languages, State Transport Commissioner, and Managing Director of Punjab Health System Corporation. Notably, she's played a crucial role in managing the COVID control room, ensuring oxygen supply to over 450 health institutions. She has served in various districts of Punjab and currently serves as the Director General of the National Institute of Fashion Technology. Apart from her professional endeavors, she holds a diploma in Hindustani classical vocal music and enjoys traveling. She cherishes nurturing her children and her Labrador while emphasizing the importance of living a life with purpose. अब मैं हमारे विशेष अतिथि महानिदेशक निफ्ट श्री तनु कश्यप जी IAS से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे डाइस पर आएं और सभा में उपस्थित स्नातकों को अपने प्रेरणादायी शब्दों से अनुग्रहित करें। Thank you so much. On the dais with me, Mr. J.J. Valaya, the chief guest for the occasion, Dean Academics, Sudhaji, the director of the Kangra campus, Rahul, the joint director, Mr. Rangra, and Saurabh, the faculty at NIFT Kangra, the guests, students, faculty, the present and the present students, and along with the chief guest on the dais, the chief guest sitting in front of us, in the hall, the pass-outs, the alumni of 2022 and 23 of NIFT Kangra. Graduates, welcome. As the Director General of NIFT, it is my great pleasure and honor to extend my warmest congratulations to all the graduates of the batches 22 and 2023 on this momentous occasion of your convocation. As we gather here,
I'm reminded of a speech that we recently heard by the PM, where he emphasized on the potential of textile and fashion industry to drive economic growth and create opportunities for millions by India for the world. The time is most favorable for the fashion, textile, and craft industries with the constant support that we are receiving from various ends. While reflecting on the contributions of my predecessors, I'm reminded of their visionary leadership and their unwavering commitment to excellence. They laid the foundation upon which we stand today, and it is our responsibility to build upon the legacy and steer NIFT towards new horizons and success of innovation. With the opening of one more proposed center of NIFT this year, we are 19 campuses, and it's an immense pleasure and pride moment for me that we are imparting the knowledge of fashion technology and fashion management and communication for over 15,000 students in the country today. We take pride in nurturing the next generation of fashion leaders, designers, entrepreneurs, and visionaries who are innovative yet conscious of the pressing needs of the world. Our mission has always been to blend tradition with modernity, artistry with technology, local craftsmanship with global perspectives, and innovation with sustainability. As all of you have already stepped out to make a mark of your own in the world out there, there's one thing that I would like to share with you. Don't lose focus from your core and follow the path it shows. Seek for the real purpose life has for you and live it joyfully and completely. May each one of you rise up to the potential you carry and feel satisfied with whatever endeavor you take ahead. You are all going to remain a part of NIFT family always. Today, you only spread your wings for your first independent flight. In fact, you already have done that, but we have called you back to your nest again to let you loose finally. We at NIFT will eagerly look forward to each of your endeavors to add a feather to our cap. While we would love to hear about your successes and happinesses, we would be happier if you reach out to your mentors and faculty in your times of needs and struggles. Enjoy your success with a smile, but welcome your failures with a bigger hug, as there's no shame in who you are. Accept yourself completely, because that is the real success each one of you must strive for. Be rest assured, any day you need a lending hand, a lending shoulder, a crying shoulder or a hand, a sounding board, or a broadcaster for your laurels, the NIFT family will always be there for you. Today marks the culmination of years of hard work, dedication, and creative exploration, and the beginning of your promising careers in the dynamic world of fashion. Your journey at NIFT Kangra has been one of growth, learning, and transformation. Each one of you has shown exceptional talent, perseverance, and passion throughout your academic pursuits, and for that, you deserve every bit of celebration and recognition. I extend my heartfelt gratitude to the faculty, staff, parents, guardians, and mentors who have played a pivotal role in shaping your journey in NIFT. Their guidance, support, and encouragement have been instrumental in your growth and development, and I'm sure it will continue in the future. On behalf of the entire NIFT community, I extend my heartfelt best wishes to each and every one of you. May your journey be filled with joy, success, and fulfillment. Congratulations once again, and remember, you will always belong to the NIFT family. All the best. Jai Hind. आपके प्रज्ञ एवं ज्ञानपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद महोदया। And now, ladies and gentlemen, we are going to go to the award ceremony. To promote holistic student development, National Institute of Fashion Technology confers students with specific awards to foster professionalism and excellence. These awards are conferred during the convocation ceremony. I request our dignitaries to please assemble for stage. Our first category of awards is for the graduation projects.
Without further ado, let's begin with the Department of Fashion Management Studies. Our newest department in today's convocation, the first winner for the NIFT Best Post-Graduation Project in Marketing and Retailing goes to Ms. Eva Rudra. The winner for the NIFT Best Post-Graduation Project in International Business and Export Merchandising goes to Ms. Ananya Rai. Could we cheer them on a little bit more, please? The winner for the NIFT Best Post-Graduation Project in Entrepreneurship and Fashion Management Practices goes to Ms. Muskan Jain. Heartiest congratulations to all the winners. शास्त्रीय डिजाइन विभाग के पुरस्कार 2022। हमारा पहला अवार्ड है निफ्ट बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और इसकी विजेता हैं काजल मेहरा। हमारा दूसरा अवार्ड है निफ्ट मोस्ट कॉमर्शियली वाइबल डिजाइन इंटरवेंशन और इसकी विजेता हैं कशिश अरोड़ा। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। For the same department, but for the awardees of 2023, the first award for the best graduation project goes to Chitra Nihalani. The award for the most commercially viable design intervention is given to Bhakti Sharma. Our third award is for the most exemplary application of design methodology, and the awardee is Chitra Nihalani. फैशन कम्युनिकेशन विभाग के अवार्ड 2022 के हमारा पहला अवार्ड है निफ्ट बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और इसकी विजेता हैं इशिता बनाती। फैशन कम्युनिकेशन में अगला अवार्ड है निफ्ट मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिकेशन डिजाइन और इसकी विजेता हैं इशिता बनाती। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। For the batch of 2023, the first winner for the NIFT Best Graduation Project is Nayati Seni. The second winner in the same category is Nupur Sailani. The NIFT Most Innovative Communication Design Awardee is Tanya Sharma. Congratulations to all the winners. Congratulations to all the winners. फैशन डिजाइन विभाग 2022 के अवार्ड हैं। पहला अवार्ड है निफ्ट मोस्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डिजाइन कलेक्शन और अवार्ड जाता है आशीष मल्होत्रा।
निफ्ट बेस्ट यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स इन कंटेम्परेरी स्टाइलिंग और इसके विजेता हैं निधि सिंह। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। For the batch of 2023 and the Department of Fashion Design, the first winner for the NIFT Best Graduation Project is Aparika Kaushal. Our next award, the NIFT Best Use of Traditional Skills in Contemporary Styling, goes to Kiran Ravi Shankar. The winner of the special NIFT Usha International Award for Best Construction of Design Collection is Snigdha Singh. Congratulations to all the winners. टेक्सटाइल डिजाइन विभाग अवार्ड 2022, वेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट 2022 और इसके विजेता हैं कोमल अतीन। इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। For the batch of 2023 from the Department of Textile Design, our first winner for the Best Graduation Project is Daisy Chaudhary. Our second winner in the same category is Aanchal Panwar. Our third winner for the Best Graduation Project is Aanchal Kumari. Congratulations to all the winners. फैशन टेक्नोलॉजी विभाग 2022 के अवार्ड है। हमारा पहला अवार्ड है बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और इसके विजेता हैं प्रेरणा गुप्ता। दूसरा अवार्ड है निफ्ट मोस्ट इनोवेटिव ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और इसके विजेता हैं प्रेरणा गुप्ता। अगला अवार्ड निफ्ट मोस्ट कॉमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त विजेता हैं जिनी मारिया सेबेस्टियन एंड निकिता डेनियल। सभी विजेताओं को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। For the Department of Fashion Technology, batch of 2023, our winner under the NIFT Most Innovative Project category is Prachi Kashyap. Our winners for the NIFT Most Commercially Viable Project is shared by Apurva Soni and Dishita Kaushik.
Congratulations to the winners. हमारा अगला अवार्ड है मेरिटोरियस अवार्ड। सभी निफ्ट परिसरों में सर्वांगीण उत्कृष्टता को प्रेरित करने, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए मेधावी छात्रों के लिए निफ्ट पुरस्कार का गठन किया गया था। ये पुरस्कार प्रत्येक बैच के प्रत्येक विभाग में 2 स्नातक छात्रों को प्रदान किया जाता है। प्रथम रैंक धारक को 15,000 रुपए का मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। दूसरा पुरस्कार 7,000 रुपए का है, साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अब मैं कैंपस एकेडमिक समन्वयक श्री सौरभ चतुर्वेदी जी और छात्र विकास गतिविधि समन्वयक श्रीमती दीपा खाखा को मंच पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। The awardees for the batch of 2022 are Kashish Arora from the Department of Fashion and Lifestyle Accessories. She secured the first place, closely followed by Kajal Mehra from the same department. Ms. Kajal Mehra from FNLA 2022. इन छात्रों के हौसला अफजाई के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। For the Department of Fashion Communication and the year 2022, our first prize goes to Ishita Banati. She is closely followed by Gurleen Kaur Sadana. For the Department of Fashion Design, batch of 2022, the Meritorious Award goes to Ms. Nidhi Singh. Our next awardee is from the Department of Textile Design for the batch of 2022. The student who has secured the first place is Komal Aitan. For the Department of Fashion Technology, the first place is secured by Prerna Gupta. And our last awardee for the batch of 2022, Department of Fashion Technology, is Ginny Maria Sebastian. वर्ष 2023 के अवार्डीज हैं। एफएमएस विभाग के प्रथम स्थान मिला है युवा रुद्रा।
द्वितीय स्थान पर हैं अनन्या राय। एसेसरी डिजाइन विभाग के प्रथम विजेता हैं चित्रा नेहलानी। इसी विभाग में द्वितीय स्थान पर हैं भक्ति शर्मा। आपकी तालीम का शोर रुकना नहीं चाहिए। फैशन कम्युनिकेशन विभाग प्रथम स्थान पर हैं पबित सोन। इसी विभाग में द्वितीय स्थान पर हैं नूपुर सैलानी। फैशन डिजाइन विभाग 2023 के प्रथम अवार्डी हैं सनिग्धा सिंह। द्वितीय स्थान पर हैं अपारिका कौशल। टेक्सटाइल डिजाइन विभाग के प्रथम विजेता हैं डेजी चौधरी। और द्वितीय स्थान पर हैं रुचिका कारवा। The next award being conferred today is the NIFT Best Academic Performance Award. The receiver of this award will be getting a gold medal, a merit certificate, and a cash prize of Rs 11,000. The award is conferred on one student in each discipline at every campus on the basis of the highest cumulative grade point average. The list of awardees for this 9th convocation are the NIFT Best Academic Award for the Department of Fashion Management Studies for the year 2023 goes to Ms. Krishna Shukla. The NIFT Best Academic Award for the Department of Fashion and Lifestyle Accessories for the year 2022 goes to Ms. Kajal Mehra. Ms. Kajal Mehra, ladies and gentlemen. The awardee from FNLA 2023 is Chitra Nehalani. For the Department of Fashion Communication for the year 2022, the awardee is Ishita Banati. For the year 2023, the NIFT Best Academic Award goes to
Tanya Sharma. The NIFT Best Academic Award for the Department of Fashion Design for the year 2022 goes to Ayushi Juneja. Please cheer the awardees on. For the Department of Fashion Design for the year 2023, the Best Academic Award goes to Snigdha Singh. The NIFT Best Academic Award for the Department of Textile Design for the year 2022 goes to, any guesses? Komal Etan. The awardee from Textile Design for the year 2023 is Daisy Chaudhary. The NIFT Best Academic Award for the Department of Fashion Technology for the year 2022 goes to Prerna Gupta. The awardee from the same department for the year 2023 is Chahat Rao. इसी क्रम में हमारा अगला अवार्ड है निफ्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस अवार्ड। ये पुरस्कार निफ्ट असाधारण सेवा पुरस्कार है जो प्रत्येक परिसर में एक छात्र को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार संस्थान को अच्छा नाम दिलाने, साहस, दूरदर्शिता, समर्पण, दृढ़ता और स्वयं से परे सेवा की उत्कृष्ट व्यक्तिगत कार्यों पर आधारित है। वर्ष 2023 के बैच के लिए इस पुरस्कार की विजेता हैं टेक्सटाइल डिजाइन विभाग से डेजी चौधरी। बधाई हो डेजी, हम आपकी और अधिक सफलताओं की कामना करते हैं। Our next award, ladies and gentlemen, is the most popular award on campus. Yes, dear audience, we are talking about the NIFT Student of the Year Award. This award is conferred on one student at each campus who brings laurels to the institute, does community activities like organizing blood donation camps, tree plantation drives, and is very linked with the student development activities on the campus. The receiver is honored with a gold medal, a certificate, and a cash prize of Rs 11,000. Would you like to guess who our awardee is for 2022? Shivanshi Sharma from the Department of Fashion Technology.
Congratulations, Shivanshi. We wish you many, many more successes. Our awardee for the batch of 2023. Any guesses? She's from the Department of Fashion Communication. Any guesses now? I'd like to invite on stage Pavit Son. Congratulations, Pavit. Wishing you many more successes. I request all the awardees to please join the dignitaries on the stage for the group photograph. Dignitaries, I request you to please take your seat. धन्यवाद। अब मैं मंच संचालन हेतु निफ्ट कांगड़ा की छात्राओं हरमनदीप और आस्था को मंच पर बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, this is the moment we have all been waiting for. All the hard work, trials, and tribulations of the graduates have led to this monumental milestone. Let's begin with the Department of Fashion Management Studies. I request Ms. Kriti Srivastava, Course Coordinator, FMS NIFT Kangra, to please come on the stage. We would like to extend the invitation to the department faculties, Dr. Rajiv Kumar, Ms. Pooja Rani, and Ms. Akanksha Daima, to please join the dignitaries on the dais. Ananya Bhardwaj, Ananya Rai, Annie Linda Hari, Eva Rudra, Azma Zenith, Purnima Soni, Krishna B. Shukla, Mahir Narang, Manasvi Sharma, Mansi Monga, Muskan Jain, Neha Kumari, Nupur Gupta, Rashi Ranjan, Shabna Mustehari Sayyad, Saloni Rai Saxena, Shivani Verma, Shayonti Sinha, Shipina AC, Vaishnavi Agarwal. Now, I would request the course coordinator, Ms. Kriti Srivastava, to accept the degree on the behalf of the batch of 2023 from our esteemed chief guest, Shri J.J. Valaya. Ma'am, we request you to join the students for the group photograph. Thank you, ma'am. Congratulations to the Department of Fashion Management Studies 2023. Thank you, department faculty. Now, I request Mr. Nitesh Krishnan, Course Coordinator, Department of Fashion and Lifestyle Accessories, to please come on the stage. We would like to extend the invitation to the department faculties, Mr. Anil Kumar Tirki, Ms. Nandita Kohli, and Ms. Kartika Vijayan, to please join the dignitaries on the stage. I request the graduating students of the batch of 2022 to please join the dignitaries on the dais. Akashdeep, Amandeep Kaur, Ayushi Kesari, Diva Chaudhary, Diya Saraswat, Gunjan Patel, Harshita Khanna, Himanshu Yadav, Janvi Singh,
काजल मेहरा, कशिश अरोड़ा, गंगन क्षितिज मिलिंद, मलक क्षितिज विठल, अक्षिता हिंगुरानी, निकिता मसानी, निपुण सोलंकी, पलक प्रसाद, प्रांजलि तिवारी, प्रियंका सकलानी, पुनीत खई, पूर्णिमा शर्मा, रितिका वर्मा, सचिन के शर्मा, समीक्षा सिंह, श्रिया सहदेव, शुभ्रजोत सन, तनिष्का मदान, and Twinkle Sarangi. I would request the course coordinator, Mr. Nitesh Krishnan, to accept the degrees on the behalf of the batch of 2022 from our esteemed chief guest, Mr. J.J. Varaya. Sir, we request you to please join the students for the group photograph. जब हो जाता है ना थम्स अप कर दिया था, ठीक है, उनको पता नहीं लग रहा। Thank you, sir. Congratulations to the Department of Fashion and Lifestyle Accessory 2022. I would request all the department faculties to please remain on the stage. अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज 2023 के सभी स्नातकों को आमंत्रित करती हूँ कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार मंच पर आएं। आस्था जिंदल, अलका, अमन पी रविंद्रन, आस्था सिंह, भक्ति शर्मा, चित्रा निहारिणी, गुड़िया कुमारी, कनिष्क कुमार शर्मा, कौशिक उपाध्याय, लगन गर्ग, निशा सिंह, रितिका तंवर, रोजा मजुमदार, श्रेया कपिल, स्वाति शिखा वर्मा, विधि शर्मा, यशस्वी। मैं पाठ्यक्रम समन्वयक श्री नितेश कृष्णन से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री जे वलाया से 2023 बैच की ओर से डिग्री स्वीकार करें। अब मैं सर से ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। The graduating students of the batch of 2022 to please join the dignitaries on the dais. Abhiraj Mehta, Aditya Chauhan, Akshata Sachdeva, Ankit Kumar Jaiswal, Ankit Pratap Solanki, Anmol Shri Roniar, Ansh Madhara, Arushi Jain, Cinderella S. William, Dipanshi Arora, Divyanshu Singh, Gurleen Kaur Sadana, Ishika Verma, Ishita Banati, Jyoti Yadav, Kshitij Chaudhary, Prithvi Singh Rathore, Lakshay, Mamta Gulati, Mihir Singh, Mrinmoy Banerjee, Purva Gupta, Pushpendra Pal, Sakshi Chaurasia, Sameer Gautam, Sarvam Pal, Sheenam, Shreya Singh, Sonal Gupta, Shrijani Mitra, Surbhi Chauhan, Sushil Kumar, Vani Achreja, Vidhi Bindal, Bhoj Yash. I would request course coordinator Ms. Deepshika Walia to accept the degrees on the behalf of the batch of 2022 from our esteemed chief guest, Mr. J.J. Valaya. Ma'am, we request you to join the students for the group photograph. Thank you, ma'am. Congratulations to the Department of Fashion Communication 2022.
I would request all the department faculties to please remain on the stage. अब मैं फैशन कम्युनिकेशन 2023 के सभी स्नातकों को आमंत्रित करती हूँ कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार मंच पर आए। आकाश राजपूत, अक्षप्रीत सिंह, अनमोल सिरकेक, अर्चिशी पठानिया, हिमांशु यादव, इशिका गोयल, महक जिंदल, सृष्टि मिसल, मुदित मेहरा, मुस्कान शर्मा, नंदिनी शर्मा, निखिल चौहान, निशिता राणा, नियति सैनी, नूपुर सैलानी, पवित्र सोंद, प्रिंसी पायल, ऋषभ कटियार, साक्षी भरद्वाज, साक्षी सिंह, सना रंधावा, श्रेया नागी, सोबिया नाज, स्वाति कनौजिया, तान्या शर्मा और वैष्णवी नेहरा। मैं पाठ्यक्रम समन्वयक श्री दीप शिखावालिया से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री जे वलाया से 2023 बैच की ओर से डिग्री स्वीकार करें। अब मैं मैम से ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का अनुरोध करूंगी। धन्यवाद मैम। फैशन कम्युनिकेशन विभाग 2023 को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विभाग के सभी संकायों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Now, I request Mr. Vinod Kumar Sharma, Course Coordinator, Department of Fashion Design, to please come on the stage. We would like to extend the invitation to the department faculties, Ms. Lavdeep Singh, Dr. Manoj Paras, Ms. Chavi Gangwar, Mr. Rajesh Dhiman, and Ms. Shaini Bhanu to please join the dignitaries on the stage. I request the graduating students of the batch of 2022 to please join the dignitaries on the dais. Arushi Khanna, Arushi Kumar, Anushka Pal, Ashish Malhotra, Ayushi Juneja, Bhavna, Chitra Patidar, Damandeep Kaur, Dhananjay Singh, Garima Yadav, Ghazal Gagneja, Himanshi Bhuti Raja, Ishpreet Kaur, Kavita Kumari, Kriti Kumari, Kritika Dihare, Manisha Manpreet Jitendra Wardikar, Mansi Singh, Mohit Sharma, Muskan Tanwar, Nidhi Singh, Nishta Gupta, Niyati Garg, Palak Shri, Pradeep Bhatt, Prashant Singh, Rhythm, Richa Saini, Saubhagya Verma, Vani, Vidushi Gupta, Vishwajit Singh Dhind, and Vishu Sharma. I would request the course coordinator, Mr. Vinod Kumar Sharma, to accept the degrees on the behalf of the batch of 2022 from our esteemed chief guest, Mr. J.J. Valaya. Sir, we request you to join the students for the group photograph. Thank you, sir. Congratulations to the Department of Fashion Design 2022. I would request all the department faculties to please remain on the stage. अब मैं फैशन डिजाइन विभाग 2023 के सभी स्नातकों को आमंत्रित करती हूँ कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार मंच पर आएं। आकांक्षा शर्मा, अग्राती आर्या, अनन्या गर्ग, अपारिका कौशल, आश्रय पुरी, अवंतिका चौधरी, आयुषी कौर, दीपांशी त्यागी, दिव्या, जानवी भाटिया, जैसिका गौतम,
जयंत केरा, कलश त्रिवेदी, किरण रविशंकर, लीसा ओमन, महक जैन, मुस्कान, नवदा ग्रोवर, पंखुड़ी, पवनप्रीत कौर, प्रियांशी शर्मा, साहिबा त्यागी, साक्षी सोनी, संजना अग्रवाल, संजना गुप्ता, शगुन, तनिष्का बाला साहेब, शिवानी गुप्ता, सिमरन, स्मृति, स्नेहा खाड़को, स्निग्धा सिंह, सुखमान संधू, स्वयं, तन्वीशा पनवर, जाहिरा यास्मीन। मैं पाठ्यक्रम समन्वयक श्री विनोद शर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री जे वलाया से 2023 बैच की ओर से डिग्री स्वीकार करें। अब मैं सर से ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। फैशन डिजाइन विभाग 2023 को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विभाग के सभी संकायों को धन्यवाद देना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Now, I request course coordinator Dr. Babita Bhandari, Department of Textile Design, to please come on this stage. We would like to extend the invitation to the department faculties, Mr. Saurav Garg, Mr. Pavitra Puneet Singh Madan, Ms. Deepa Khaka, Mr. Aditya Chaurasia, and Dr. Gargi Bhattacharjee, to please join the dignitaries on the stage. Now, I request the graduating students of the batch of 2022 to please join the dignitaries on the dais. Anya Karnawal, Abhilasha Singh, Adya Parkhar, Anushka, Ahmed Arzu Mumtaz, Vedanga Kakte, Bhuvi Mittal, Chanika Yadav, Deepika Chauhan, Deepika Panwar, Dishti Gera, Kalyani, Komal Adam, Kriti Jain, मृण्मय कुंभारे, निधु बाला, राजलक्ष्मी उत्तम सेशा, रवीना सिन्हा, साक्षी अरोरा, सपना आर्या, सौम्या उदायन, शालिनी कनौजिया, शिवांगी जायसवाल, श्रुति अग्रवाल, विधि भारद्वाज, and Vrinda. I would request the course coordinator Dr. Babita Bhandari to accept the degrees on the behalf of the batch of 2022 from our esteemed chief guest, Mr. J.J. Valaya. Ma'am, we request you to join the students for the group photograph. Thank you, ma'am. Congratulations to the Department of Textile Design 2022. I would request all the department faculties to please remain on the stage. अब मैं टेक्सटाइल डिजाइन विभाग 2023 के सभी स्नातकों को आमंत्रित करती हूँ कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार मंच पर आएं। आंचल पनवर, आरती कुमारी सरोज, अनामिका चौधरी, आंचल कुमारी, अपूर्वा रावत, अरुणिमा गौतम, भूमिका प्रसाद, डेजी चौधरी, दीक्षा महाजन, गोरले योगिता, कथुबंदी प्रज्ञा, के साई प्रदीप्ति, मलिश्का लवन्या मलिक, नैना यादव, नंदिनी नौटियाल, राधिका गहलावत, रिया जैन, रुचिका करवा, शिवानी कुमारी, सृष्टि प्राशर, श्वेता धीमान, सृष्टि जोशी, सृष्टि स्वराज, सुकृति अमन, वृंदा खुंगे। मैं पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बबीता भंडारी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री जे वलाया से 2023 बैच की ओर से डिग्री स्वीकार करें। अब मैं मैम से ग्रुप फोटोग्राफ
समारोह में शामिल होने का अनुरोध करूंगी। धन्यवाद मैम। टेक्सटाइल डिजाइन विभाग 2023 को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विभाग के सभी संकायों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Now, I request Course Coordinator Mr. Aman Nagpal, Department of Fashion Technology, to please come on the stage. We would like to extend the invitation to the department faculties, Mr. Saurabh Chaturvedi, Mr. Neeraj Kumar Jaiswal, Mr. Mohammad Umar, Mr. Kamaljeet Singh, Dr. Swati Sharma, to please join the dignitaries on the stage. I request the graduating students of the batch of 2022 to please join the dignitaries on the dais. Amritanshu Gupta, Bharkha, Divyanshu Singh, Dushyant Kumar, Harshil Chopra, Ginny Maria Sebastian, Jyoti Ragal, Muskan Sharma, Muskan Yadav, Nakul Juneja, Nikita Daniel, Nishtha Verma, Pallav, Prajwal Purohit, Prateek, Pratiksha, Prerna Gupta, Priya Sharma, Sai Sujay JK, Sania Arshi, Sanya Kakkar, Sarthak Jain, Sarthak Roy, Saurav Kumar, Shivanshi Sharma, Snigdha Roy, Surmay Umathe, Ujjwala Jain. I would request the course coordinator, Mr. Aman Nagpal, to accept the degrees on the behalf of the batch of 2022 from our esteemed chief guest, Mr. J.J. Balaya. Sir, we request you to join the students for the group photograph. Thank you, sir. Congratulations to the Department of Fashion Technology 2022. I would request all the department faculties to please remain on the stage. अब मैं फैशन टेक्नोलॉजी विभाग 2023 के सभी स्नातकों को आमंत्रित करती हूँ कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार मंच पर आएं। अखिल कुमार, अमनजीत पनवर, अंकित कुमार, अपूर्वा सोनी, अपूर्वा श्रीवास्तव, अर्पिता शर्मा, अरु, चाहत राव, चार्वी नीलेश भगत, दिशिता कौशिक, दिवनूर शर्मा, दिव्यांशी गोयल, लवनीश कोतवाल, मेहुल शर्मा, मिताली सैयल, पूजिता शर्मा, प्राची कश्यप, प्रांजल जायसवाल, प्रेम रंजन, रिधिमा मिश्रा, सरिनी कुमारी सिंह, सार्थिक भारवेर, सौरभ कुमार महातो, सिमरन, सोनाक्षी भारद्वाज, सौरभ कुमार, स्वराज एस पाटिल, तनिष्का कुंडल and Vani Sharma.
श्री अमन नागपाल से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री जे वलाया से 2023 बैच की ओर से डिग्री स्वीकार करें। अब मैं सर से ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। फैशन टेक्नोलॉजी विभाग 2023 को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विभाग के सभी संकायों को धन्यवाद देना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। With this, we have come to the end of the distribution of awards and degrees. The students here today have culminated the journey in college within the hollowed walls of their alma Students, mater. you are requested to be in the hall, please. The program is still continuing. Please be seated. Request you all to be seated, please. Within the hallowed walls of their alma mater, they have learned, evolved, and built Friends, their please be personalities, ready to take on the rigors of the industry. Heartiest congratulations to the batches of 2022 and 2023. I'm Harman Pandey And I am Asta Agarwal. signing off. मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री जे वलाया जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे कृपया करके इस सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जे वलाया जी एक मशहूर जाने माने फैशन डिजाइनर हैं। वलाया जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में फैशन डिजाइन का अध्ययन किया है, जहां उन्होंने वर्ष 1991 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप एक जाने माने फैशन डिजाइनर हैं। आपने 1992 में एक लग्जरी फैशन और लाइफस्टाइल हाउस ऑफ वलाया की स्थापना की। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य भी रहे और क्रिस्टल दिग्गज स्वारोस्की के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने। आप 30 वर्षों से अधिक समय से डिजाइन कर रहे हैं। एक बेहतरीन कला फोटोग्राफर हैं। आपने सन 2011 में अपनी पहली पुस्तक डिकॉर्डेड पैराडॉक्स जारी की। उसी वर्ष आपने लक्मे फैशन वीक शीतकालीन उत्सव 2011 के पहले दिन का समापन भी किया। आपने फोटोग्राफी से प्रेरित एक फैशन संग्रह की शुरुआत की। धन्यवाद। Okay, I promise I'm not going to make this very long. You can be out there and upload all the images you want very soon. So we're going to go back in time a little. In 1989, when I entered a world that didn't exist, and I also entered my dream, the world that didn't exist was fashion. There was no industry, and the dream was NIFT. And the reason I say this is because you're exactly at that stage today where I was 35 years back. After I graduated, 26 years later, I took my daughter to show her NIFT. And as I was roaming around at the gallery, the then dean, walked out to meet me. And she said, "Would you like to take your graduation certificate?" They actually kept my graduation certificate for 26 years. I got it 26 years later, and it was one of the happiest days of my life. The reason I'm bringing this up is also because we may be taking home a piece of paper, but this is where you and I become one now. But this paper is validation of you being amongst the most superior design people in the country. And that's something we often forget and we take for granted. You have been trained by the best,
and you're possibly entering the best market you could ever enter in the world as we speak. So you've got to kind of acknowledge that and feel very happy and proud about that. And I'm going to talk in we now because we're like one body. But we as designers, as aesthetically correct people, now have a simple duty, which is we need to celebrate our country. And by this, I mean that, yes, it's very good to look at the West, be inspired by what's happening. They are far more advanced in the industry norms than us. But we have something that they don't. And we have a legacy, and we have a history, and access to unbelievable amount of crafts. And that's, again, something we take for granted. So if all of us sort of got together and made a pledge today that we will create a new India, aesthetically endowed, pleasing, making a mark globally, but we will do it by remaining connected with our roots. We have a winning formula. So all the best, guys, and go shine. Thank you. अपने ज्ञानपूर्ण शब्दों से हमें प्रवृत्त करने के लिए धन्यवाद महोदय। It is my honor to call upon our Joint Director and Controller of Examinations, NIFT Kangra, Shri Dinesh Kumar Rangda, to share the vote of thanks. आदरणीय मुख्य अतिथि श्री जे वलाया जी, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री तनु कश्यप जी, IAS महानिदेशक निफ्ट, डॉक्टर सुधा ढींगरा, सीनियर प्रोफेसर डीन शैक्षणिक निफ्ट और निफ्ट कांगड़ा के समस्त संकाय सदस्य एवं कर्मचारी गण, और 2018, 2022 और 2019, 2023 स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र, मैं दिनेश कुमार रंगरा, संयुक्त निदेशक निफ्ट कांगड़ा, आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस विशेष दिन पर धन्यवाद का भाषण देने का सम्मानित अवसर और विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने निफ्ट कांगड़ा में 9वां दीक्षांत समारोह का उत्सव मनाया है। इस दीक्षांत समारोह में हमने 310 छात्रों का स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्र 2009-2013 से सत्र 2019-2023 तक कुल 1587 छात्र स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। प्रिय स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्ष 2018, 2022 और 2019-2023 डिग्री के प्राप्तकर्ता, यह आपके जीवन में एक लाल अक्षर का दिन होगा। लंबी आकांक्षाओं की परिणति और वर्षों की एक साथ कड़ी मेहनत होगी। आपको अपने माता पिता और अभिभावकों के लिए बहुत संतुष्टि की भावना भी प्रदान करनी चाहिए, जिन्होंने आपको सफल देखने के लिए बेहद बलिदान दिए हैं। सफलता का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हमेशा इस सफलता के आधार पर आपके ऊपर उज्जवल भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी होती है। आपको यह समझना चाहिए कि सफलता आजीवन सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत है, और यह सीखने की कुंजी जिज्ञासा है। कन्वोकेशन का अर्थ होता है कि आप कैंपस की इस दुनिया से निकलकर रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप सबको इंस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी चीज़ से अधिक आपका गौरवशाली अतीत, आपकी समृद्ध परंपरा जो आपको प्रेरित कर सकती है। आपने अपना बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए ऊंची चोटियां भी हैं। मैं मुख्य अतिथि श्री जे वलाया, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री तनु कश्यप, IAS महानिदेशक निफ्ट, डॉक्टर सुधा ढींगरा, सीनियर प्रोफेसर डीन शैक्षणिक निफ्ट,
एवं मीडिया क्षेत्र के आए सभी पत्रकार सदस्य और उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं निफ्ट कांगड़ा के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को पिछले वर्ष के दौरान निरंतर समर्थन और समर्पण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह संस्थान एक महान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होने के मार्ग पर है और वास्तव में इसे भविष्य में आपका प्रदर्शन और सफलता ही आगे बढ़ा सकती है। जहां भी आप किसी भी स्थिति में हों, कृपया अपने मातृ संस्थान को याद रखें जहां से यह सब कुछ शुरू किया है और इस संस्थान को भविष्य में सभी संभव तरीकों से समर्थन देने का प्रयास करें। आप इस संस्थान के सबसे बड़े दूत बनने जा रहे हैं और आपकी सफलता और हमारे प्रयासों के साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कांगड़ा इस राष्ट्र की उम्मीदों को पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रिय स्नातकों, आपके स्नातक दिवस का उत्साह साझा करने की हमें बेहद खुशी है। आपके जीवन का ये अहम दिन यहाँ बिताए गए 4 उत्साहपूर्ण, साहसिक और चुनौतीपूर्ण वर्षों के अंत का प्रतीक है। कभी ना खत्म होने वाली असाइनमेंट्स का अंत, ज्यूरीज और रीडूज का अंत, लेकिन कहा जाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। आज शुरुआत है नई सीख की, नए अनुभवों की और एक नए सफर की जो लाएगा नई चुनौतियां। पर अगर कभी भटक जाओ तो बस याद रखना उस उद्देश्य को जो आपको इस संस्थान में लाया था, वो सपने जिन्हें पूरा करने आप निकले थे। सफर आसान हो जाएगा और रास्ते खुद ब खुद आपको ढूंढ लेंगे। स्नातक होने की आपको हार्दिक बधाई और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Dear students, before you set out to follow your dreams, we wish for you that this life becomes all that you want it to be. We hope your dreams stay big, your worries small, and that you never need to carry more than you can hold. On that note, I request our director, Shri Rahul Chandra, to request our chief guest to declare the 9th convocation ceremony of NIFT Kangra closed. Sir, may I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation to close. अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The academic procession will now be leaving the auditorium. Therefore, I request the entire audience to please keep standing in your places till the procession leaves.
You